First of all, today I am going to discuss activities associated with Chola temples. Chola kingdom, you can see here in South India, Madras wala area देखो Tamil Nadu, Chola kingdom means South Indian dynasty. ठीक, Tamil Nadu wala area, Chola dynasty. So activities associated with Chola temples. Now what were the activities associated with Chola temples? Listen carefully. Temples became the center of settlements and craft production. Land was donated by rulers, and production of the land was used for the maintenance of the people who lived near temples, such as priests, garland makers, cooks, sweepers, etc. craft persons. ठीक है? Next, temples were not only the center of worship. Temples became the hub of various activities such as social, economic, and cultural. Images of deities and devotees were made of bronze in Chola temples. Bronze images of deities and devotees were also made in Chola temples. And bronze images of Cholas were considered finest in the world. Bronze images of Cholas were considered finest in the world. पूरे वर्ल्ड में फेमस है इनके ब्रोंज इमेजेस. तो टेम्पल से रिलेटेड एक्टिविटीज क्या थी? लिसन केयरफुली. टेम्पल बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन. ठीक है? एंड लैंड फॉर द टेम्पल वाज डोनेटेड बाय रूलर्स. Produce of the land was used for the maintenance of people who lived near temples, such as priests, garland makers, craft persons, sweepers, cooks, etc. Temples were not only the center of worship, they became the hub of social, cultural, and economic activities. Bronze images of deities and devotees were also made in Chola temples, and their bronze images were considered finest in the world. So these were the activities associated with Chola temples. Next, about the agriculture and irrigation system under Cholas. Now listen carefully. Cholas made great progress in the agriculture. Cholas made great progress in agriculture and in irrigation system. They made great progress. They made great developments. Great progress were made in the period of Chola in the field of agriculture and irrigation. As this region, river Kaveri flow through this region. Look here, you can see here, river Kaveri flow through this region. You can see here river Kaveri, Chola Empire, river Kaveri flow through this region. So the water of river Kaveri and its tributaries make the soil fertile. Water of river Kaveri and its tributaries made the soil fertile. And this area was good for rice cultivation. अभी भी ये area good for rice cultivation है. आप ऐसे बताओगे, Cholas made great developments in the field of agriculture and irrigation. First of all, तो river Kaveri उनको सबसे पहले तो river Kaveri से उन्हें help मिली. River Kaveri flow through this region. Water of river Kaveri and its tributaries made the soil fertile. And this region was famous for rice cultivation. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे soil fertile and famous for rice cultivation. एक तो ये. Cholas cleared forest areas को इन्होंने clear किया and brought the land under cultivation.
लैंड कल्टीवेशन के अंडर ही है. Embankments were made to prevent floods and they constructed various canals also. Canals भी इन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्ट की to provide water for irrigation. As river Kaveri was rain-fed river, river Kaveri अभी भी rain-fed river है. River Kaveri is rain-fed river. अब हम तो पास कर रहे हैं तो river Kaveri was rain-fed river. So Cholas used artificial methods for irrigation. इन्होंने artificial methods भी use किए. अब for this they constructed tanks, they dug wells and collected rainwater and used that rainwater for irrigation. ठीक है. और क्या किया इन्होंने irrigation field में? They set up planning committee. इन्होंने एक प्लानिंग कमेटी बनाई. प्लानिंग कमेटी, इरिगेशन कमेटी, जो कि क्या क्या डिसाइड करती थी? दिस कमेटी डिसाइडेड हाउ रिवर वाटर, रिसोर्सेज एंड लेबरर्स वर टू बी शेयर्ड. तो दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. लिसन अगेन, चोलास ने एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में बहुत डेवलपमेंट्स की. रिवर कावेरी उनको वैसे ही उनकी हेल्प होगी क्योंकि रिवर कावेरी फ्लो थ्रू दिस रीजन. ब्रांचेस एंड रिवर कावेरी मेड द सॉइल फर्टाइल. दिस एरिया वाज गुड फॉर राइस कल्टीवेशन. नेक्स्ट, फॉरेस्ट क्लियर किए, ब्रॉट द लैंड अंडर कल्टीवेशन. एम्बैंकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्लड्स एंड canals were constructed to provide water for irrigation. As river Kaveri was rain-fed river, so Cholas used artificial methods for irrigation. For this, they dug wells, they constructed tanks and collected rainwater and used that water for irrigation. Planning committee was also set up. That planning committee decided how river water, resources and laborers were to be shared. So this is about agriculture and irrigation. Now next is administration. Administration under Cholas. Settlements of peasants was known as Ur. One more question can be asked. What do you mean by Ur? Settlements of peasants was known as Ur. Settlements of peasants was known as Ur. Next, Nadu. Group of villages were known as Nadu. And what were the functions performed by Nadu? Now listen carefully. नहीं है ना बैक पे ये क्वेश्चंस बच्चे, they can be asked in the paper. Write the functions performed by Nadu. Yeah, what do you mean by group of villages? What do you mean by Nadu? Write its functions. ठीक है? What do you mean by Nadu? Group of villages was known as Nadu. Write its functions: to look after the administration, to collect taxes and to take care of irrigation. यहाँ to construct temples. What were the functions of Nadu and to provide justice? Listen again. Group of villages were known as Nadu. What do you mean by Nadu? Group of villages. Functions: to take care of administration, to collect taxes, to provide justice to the people. To provide justice to the people. And rich peasants of Valella caste looked after Nadus. Nadus को कौन देखता था? Rich peasants of Valella caste. Is it clear? These questions are not given at the back, but they can be asked. What do you mean by Ur? Settlements of peasants. What do you mean by Nadu? Group of villages were known as Nadu. Write the functions of Nadu: to look after the administration, to collect taxes, to provide justice to the people. Who looked after the work of Nadu? Rich peasants of Valella caste. Rich peasants of Valella caste looked after the work of Nadus. Is it clear? Next, Brahmins were given land grants, and land grants given to the Brahmins were known as Brahmadaya. One more question can be asked. What do you mean by Brahmadaya? Land grants given to the Brahmins were known as Brahmadaya. Land grants given to the Brahmins were known as Brahmadaya.
and Brahmadaya was looked after by a committee known as Sabha. Brahmadaya was looked after by a committee known as Sabha. अब एक मिनट, नगरम क्या है? Associations of traders and merchants. Association of traders and merchants who worked in towns, who looked after the administration in towns. Association of traders and merchants in towns. Is it clear? मैं फिर repeat करती हूँ. Ur, settlements of villages. Nadu, group of villages were known as Nadu. Rich peasants of Villela caste looked after the work of Nadus. What were the functions performed by Nadus? To take care of administration, to collect taxes, to provide justice to the people. Association of traders was known as, association of traders or merchants was known as Nagram. Next, land grants were given to the Brahmins were known as Brahmadaya. जो ब्राह्मणों को लैंड देते थे ना, गिफ्ट देते थे, जो उसको क्या कहते थे? ब्रह्मदया. एंड ब्रह्मदया वर कंट्रोल्ड बाय सभा, अ कमेटी नोन एज सभा. अब आ जाओ सभा पे. नो, व्हाट डू मीन बाय सभा? अ कमेटी दैट लुक्ड आफ्टर ब्रह्मदया, कमेटी ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स एंड लैंड होल्डर्स. ये होती थी सभा. Committee of rich land holders, landlords or prominent Brahmins. ये होती थी सभा. अब सभा had different committees. सभा में आगे different committees थी. सभा में आगे कौन कौन सी कमेटी थी? First is, मैं इधर लिख देती हूँ. सभा had different committees. That is, वो कौन कौन सी committees थी? Temple committee, irrigation, listen again, temple, irrigation and garden committee. सभा की आगे ये committees थी. सभा had different committees. Temple committee, irrigation committee, garden committee. जैसे मैं बोलूँ cleanliness monitor, uniform monitor and English speaking monitor, हर एक का काम different है. तो इसमें भी आगे committees थी. ठीक है? Temple committee, garden committee, irrigation committee. Now, how the members of Sabha were elected? Though this question is not given at the back, but it can come in paper. अब सभा के members elect कैसे होते थे? How they were elected? तो आपने बताना है name of the eligible members. Name of the eligible members were written on palm leaves and then put them in the earthen pot. Name of the eligible members were written on, किस पे लिखते थे? Palm leaves पे. And then put them in the earthen pot. किस में डाल देते थे? Earthen pot. Then young boy was asked to pick up the tickets from the pot. Young boy को बुला के कहते थे उस pot में से tickets निकालने के लिए. And in this way, they selected the members of these committees. Sabha had different committees: temple committee, irrigation committee, and garden committee. ठीक है? These committees performed their functions differently. How the members of Sabha were elected? For this, names of eligible members were written on, किस पे लिखते थे? Palm leaves. का पेपर नहीं होता था. And then put them in the earthen pots. And then young boy was asked to pick up tickets. अब जिसके नाम उसमें आते जाते, जिस फील्ड में, जिस कमेटी में आते जाते, in this way they elected the members of the Sabha. Now, what were the qualifications to become the member of the Sabha? अब eligible मैंने बोला word कि eligible, name of the eligible members were written on palm leaves. अब एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन सी कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए थी? क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है MA BA की डिग्री. नो, लिसन केयरफुली. क्वालिफिकेशंस कैसी थी टू बिकम द मेंबर ऑफ द सभा? सभा का मेंबर बनने के लिए कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए थी? व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बिकम द मेंबर ऑफ द सभा? नो, लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन शुड हैव
person must have his own land from where revenue was to be collected. पर्सन के पास अपनी लैंड होनी चाहिए जहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता हो. पर्सन मस्ट हैव हिज ओन लैंड फ्रॉम वेयर रेवेन्यू वाज टू बी कलेक्टेड. सेकेंड, ही मस्ट हैव हिज ओन होम. उसका अपना घर होना चाहिए. ही मस्ट बी बिटवीन 35 to 70 years ऑफ एज. ठीक है, 35 और 70 years के बीच उसकी एज होनी चाहिए. ही मस्ट हैव नॉलेज अबाउट वेदास. He must be honest, honest भी होना चाहिए, and skilled in administrative work. He must have knowledge about administrative work, and he must be honest. Honest भी होना चाहिए. ठीक है, तो these were the qualifications required to become the member of Sabha. You know it very well how the members of Sabha were elected. Palm leaves पे name लिखते थे and write the qualifications to become the member of Sabha. मैंने अभी बोला कैसी, अभी तो ये लर्न भी हो गया होगा. क्वालिफिकेशंस, कैसी क्वालिफिकेशंस चाहिए थी? आपने बताना है पर्सन के पास खुद की लैंड होनी चाहिए फ्रॉम वेयर रेवेन्यू वाज टू बी कलेक्टेड. पर्सन मस्ट हैव हिज ओन होम, मस्ट हैव नॉलेज अबाउट वेदास. ही मस्ट be between 35 to 70 years of age. He must be honest. He must be good in administrative work. So these were the qualifications needed to become the member of the Sabha. So our lesson is completed, and first of all, हाँ जी, इधर आ जाओ आप. Who were the parties involved in tripartite struggle? You know it very well. 10 बार आप कर चुके हो. Tripartite struggle की parties: गुजराप्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास. गुजराप्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास. पालास किस साइड है? बंगाल वाली साइड. गुजराप्रतिहारास गुजरात एंड राजस्थान. राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन. यू नो इट वेरी वेल. एंड देन चोला का तो पता ही, चोला इसमें नहीं आना, वैसे बता रही हूँ. चोलास भी लिखा हुआ है, साउथ इंडिया की डायनेस्टी है. ट्री-पार्टेड में आप सिर्फ ये 3 डायनेस्टीज लिखोगे, गुजराप्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास. नेक्स्ट, व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बिकम मेंबर ऑफ सभा? भी तो मैंने बोला, ये टॉपिक भी था. यू नो यू कैन डू इट योरसेल्फ. आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को. क्वालिफिकेशंस आप लिख सकते हो टू बिकम द मेंबर ऑफ सभा. यस. मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चौहानास. मेजर सिटीज दिल्ली एंड अजमेर. ये भी आपको पता है बिकॉज यू हैव डन इट बिफोर. दिल्ली एंड अजमेर. नेक्स्ट, हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूटास पावरफुल कैसे बने? हाउ दे बिकम पावरफुल? हाउ डिड दे बिकम पावरफुल? क्या किया ऐसा? यू नो इट वेरी वेल. राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. ये देखो कर्नाटका वाली साइड ही है ये. राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. पहले तो आपको यही बताना है कि ये सबऑर्डिनेट थे किसके? चालुक्यास के, कर्नाटका के. राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. ठीक है. दंती दुर्गा, राष्ट्रकूटा चीफ, declared himself independent by overthrowing his lord. आपको पहले भी आपने किया हुआ है. समंता जब दिल करता था, जब देखते थे हमारा रूलर वीक है, they declared themselves independent. पता है ना? You have done it before ना. तो राष्ट्रकूटास कौन थे? दे वर सबऑर्डिनेट टू, किसके सबऑर्डिनेट से? ये चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. दंती दुर्गा वाज राष्ट्रकूटा चीफ and he declared himself independent by overthrowing his ruler, by overthrowing his overlord. Overthrow कर दिया था इसने. Then he performed a ritual known as Hiranyagarbha (bracket में golden womb) with the help of Brahman. Then he performed, क्या परफॉर्म किया था उसने? एक रिचुअल. कौन सा रिचुअल? हिरण्यगर्भा with the help of Brahman. Golden womb with the help of Brahman. Next, this led to his rebirth. इसी से उसका rebirth हुआ ना. This led to his rebirth as a Kshatriya. Earlier he was not Kshatriya. This led to his rebirth as Kshatriya because earlier he was not Kshatriya. पहले वो क्षत्रिय नहीं था, but अब उसका rebirth हुआ तो वो क्षत्रिय बन गया. इस by performing this ritual he became Kshatriya. He performed ritual. Which ritual? Hiranyagarbha, golden womb, with the help of Brahman.
and this led to his rebirth as Kshatriya. Earlier he was not a Kshatriya. पहले वो क्षत्रिय नहीं था. What did new dynasties do to gain acceptance? What did new dynasties, यही new dynasties हैं, do, ये सारी जो आपको दिख रही हैं, गुजरात, प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, चोलास, ये सारे. What did these dynasties, what did new dynasties do to gain acceptance? First of all, new dynasties tried to control the areas of other rulers. न्यू डायनेस्टीज क्या करती थी? ट्राई टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ अदर रूलर्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी बताओगे, गुजरात, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, कोट, कोर, कन्नौज. न्यू डायनेस्टीज, आपको मैंने पहले ही बोला इनके बारे में लिखना आपने. न्यू डायनेस्टीज ट्राइड टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ अदर रूलर्स. सबसे पहले तो दूसरे के एरिया को अपने अंडर करने की कोशिश करते थे. ठीक है. हियर आप फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे. फॉर एग्जाम्पल, आप तीनों डायनेस्टीज के नाम लिखोगे, गुजरात, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, कोट, कोर, कन्नौज. ये कन्नौज के लिए लड़े थे. न्यू डायनेस्टीज वांटेड टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ अदर रूलर्स. फॉर एग्जाम्पल, गुजरात, प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, कोट, कोर, किसके लिए लड़े? ये कन्नौज के लिए. नेक्स्ट, अब आपको पता है चोलास ने टेम्पल्स बनवाए, है ना. दे शोड their resources and power by building beautiful temples. They showed their power and resources by building beautiful temples. वो शो ऑफ करते थे. अब कोई बहुत सुंदर घर बना दे, बहुत सुंदर बंगलो बनाए, तो ये क्या शो होगा कि बहुत रिच है वो पर्सन. ये कैसे शो करते थे? They showed their power and resources by building, क्या बनाते थे? ब्यूटीफुल टेम्पल्स. दे शोड देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग ब्यूटीफुल टेम्पल्स. ये देखो इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे, इन्होंने चोलास ने तंजावर में टेम्पल्स बनवाए थे इन्होंने. दे शोड देयर पावर एंड रिसोर्सेज. कैसे शो करते थे? बाय बिल्डिंग ब्यूटीफुल टेम्पल्स. नेक्स्ट, अब गजनी को याद करो. गजनी, गौरी, आपने इनके भी बारे में इस लेसन में पढ़ा. दे अटैक्ड द टेरिटरीज ऑफ अदर्स. दे अटैक्ड द टेरिटरीज ऑफ अदर रूलर्स एंड टारगेटेड द टेम्पल्स. किसको टारगेट बनाते थे? टेम्पल्स. बिकॉज टेम्पल्स वर एक्सट्रीमली रिच इन दोज डेज. दे अटैक्ड द टेरिटरीज ऑफ अदर रूलर्स. दूसरे रूलर्स की टेरिटरीज पे अटैक करते थे. एंड टारगेटेड द टेम्पल्स because temples were extremely rich. आपको सारे लेसन में से न्यू डायनेस्टीज के बारे में बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट न्यू डायनेस्टीज ट्राई टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ अदर रूलर्स. फॉर एग्जाम्पल, गुजरात, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, कोट, कोर, कन्नौज. नेक्स्ट, दे शोड देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग ब्यूटीफुल टेम्पल्स. चोलास का आपको पता ही है, ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए थे इन्होंने. They showed their power and resources by building beautiful temples. They attacked the, अब यहाँ पे किसको याद करना है? गजनी एंड गौरी. They attacked the territories of other rulers and targeted the temples because temples were extremely rich. Here you can give example of Gauri and Ghazni. Ghazni की example दे सकते हो आप. They attacked the territories of others and targeted the temples because temples were extremely rich. उनको टेम्पल से बहुत कुछ मिलता था, प्लंडरिंग करते थे फिर वो टेम्पल्स में. ठीक है. तो दिस इज अबाउट हाउ न्यू डायनेस्टीज, व्हाट डिड न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट, इरिगेशन वर्क अंडर चोलास. तो अभी आपने एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन किया, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ. ओनली इसमें से एग्रीकल्चर छोड़ दो, इरिगेशन के बारे में बता दो. आप क्या बताओगे इरिगेशन वर्क में? आप यही बताओगे चोलास मेड ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द इरिगेशन वर्क. एग्रीकल्चर छोड़ दो बिकॉज एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं पूछा. अगर पेपर में एग्रीकल्चर आता है तो यू विल राइट. आपको दोनों ही करने हैं, बट आपका बैक क्वेश्चन जो है वो नहीं कह रहा एग्रीकल्चर के बारे में. ठीक है. लर्न अबाउट एग्रीकल्चर आल्सो, बट हियर यू विल राइट ओनली अबाउट इरिगेशन.
Cholas made great progress in irrigation. Cholas made great developments in irrigation. फिर आप बताओगे, पहले तो they constructed canals irrigation के लिए, to provide water for irrigation. They constructed canals to provide water for irrigation. They also used artificial methods for irrigation. उन्होंने artificial methods भी use किए for irrigation. They dug wells. They constructed tanks to collect rainwater and use that water for irrigation. फिर आप बताओगे, they set up planning committee, and that committee decided how river water, laborers and resources were to be used. Cholas made great developments in the field of irrigation. They constructed various canals. ये तो आपको पता है ना, उनकी रिवर कावेरी रेन फेड थी, तो उन्होंने आर्टिफिशियल मेथड्स भी यूज किए, क्योंकि कई बार कावेरी रिवर में पानी सूख जाता था। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। दे यूज, क्यों आर्टिफिशियल मेथड यूज किए? अगर उनके पास कैनाल्स थी, रिवर थी, बट रिवर कावेरी वाज रेन फेड रिवर ना, तो दैट्स वाई आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए। दे कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। फिर आप बताओगे दे और इन्होंने क्या किया चोलास ने? दे यूज्ड आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर इरिगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए फॉर इरिगेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या किया? दे डग वेल्स, दे कंस्ट्रक्टेड टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है। फिर आप बताओगे प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप and that decided how river water resources and laborers were to be shared. Is it clear? Next is activities. You have done just now activities associated with Chola temples. Temples became the center of settlements and craft production. Land for temple was given by rulers, ठीक है। फिर इसी में आप बता दोगे production produce of the land was used for the maintenance of people who live near temples. अब आपको पता है temples के पास कौन कौन रहते थे? Priests रहते होंगे, garland makers रहते होंगे, cooks, sweepers, craft persons, ये सब, ठीक है। Temples were not only the center of worship. Temples became the hub of social, economic, and cultural activities. Bronze images of deities and devotees were also made in Chola temples, and their bronze images were considered finest in the world. ठीक है। So this is about the whole chapter